तो क्रिप्टोग्राफी में सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी होती क्या है ये समझो और किस तरीके से हम करते हैं, है ना। क्रिप्टोग्राफी है क्या? क्रिप्टोग्राफी इज द फॉर्म ऑफ इंक्रिप्शन इटसेल्फ। इसके अंदर क्या होता है? इंक्रिप्शन होता है। इंक्रिप्शन मैनर हम यूज करते हैं, खुद में ही एक इंक्रिप्शन टर्म है। Where a readable plain text format is converted into the another form which does not leave the value of the plain text as it was before, but the basic difference will be like the converted form will be readable by the human, but it will be no sense like यहाँ पे क्या है कि ऐसा एक टेक्स्ट, एक ऐसा इंक्रिप्शन फॉर्मेट जो कि रीडेबल होता है, जस्ट लाइक अ प्लेन टेक्स्ट जो हम कन्वर्ट करके किसी अनदर फॉर्मेट में बनाते हैं उसको, है ना। ये प्लेन टेक्स्ट की जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसे छोड़ता नहीं है, मतलब एक्चुअली उसी प्लेन टेक्स्ट के ऊपर कन्वर्ट होता है, यानी कि उसकी वैल्यूज चेंज कर दे, ऐसा नहीं करता। बट जो डिफरेंस क्या है कि आपका जो प्लेन टेक्स्ट और कन्वर्टेड टेक्स्ट, हमें दो टेक्स्ट मिलते हैं। कन्वर्टेड टेक्स्ट जो हमें मिला है उसको कोई भी पर्सन इजीली रीड तो कर सकता है, बट उसके मतलब का नहीं रह जाता, बिकॉज देयर इज नो सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइक रीडेबल टेक्स्ट, है ना। वो जो रीडेबल टेक्स्ट है उसको रीड करने के बाद उसको समझ में नहीं आता, बिकॉज दैट इज अ कन्वर्टेड टेक्स्ट, है ना। किसी में भी हो सकता है, हैश में हो सकता है, या फिर आपका पर्टिकुलर साइफर टेक्स्ट हो सकता है, इंक्रिप्शन टेक्स्ट हो सकता है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोई सा फॉर्मेट हो सकता है, बट वो पर्सन नॉर्मली उसे रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो दैट टाइप ऑफ टेक्स्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ क्रिप्टोग्राफी या इंक्रिप्शन टेक्स्ट, ठीक। This encryption technique is used mostly for securing and maintaining the privacy of data. यहाँ पे क्या होता है कि इंक्रिप्शन टेक्स्ट हम जो यूज करते हैं वो ज्यादातर यूज किया जाता है प्राइवेसी को ध्यान रखते हुए या अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। Yes. For this technique, user have an encryption algorithm and a key for its description. यहाँ पे क्या होता है कि दो चीजें यूज होती हैं, एक तो एल्गोरिदम यूज होती है जिसके बेसिस पे उसको हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। प्लस एक की यूज होती है जिस की का यूज करके ही हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं या उसे क्रैक कर सकते हैं, ठीक है, डिक्रिप्ट कर सकते हैं। इवन एन इंक्रिप्शन के लिए भी एक की का यूज करते हैं। यूजर विल ट्रांसमिट that encrypted message, receiver will receive, जो भी यूजर ने ट्रांसमिट किया मैसेज रिसीवर रिसीव करता है। now the receiver to understand he needs to convert into the plain text cipher, for that he again need the key to find the exact algorithm। वहां पे क्या होता है कि वो एग्जैक्ट एल्गोरिदम उसको पता होनी चाहिए, ठीक है, जो भी उसने इंक्रिप्शन के टाइम पे यूज करी थी, वो अगर उसके पास एल्गोरिदम है प्लस उस एल्गोरिदम के साथ अगर उसे की पता है तो दे कैन इजीली डिक्रिप्ट या इजीली परफॉर्म द डिक्रिप्शन पार्ट ओवर द इंक्रिप्शन टेक्स्ट, राइट। यस। ओके, इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं, वो सबसे पहला क्या है हमारे पास? प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, इंक्रिप्शन टेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, a text which is created and readable by the individuals only like ABCD 1 2 3 4 या फिर आपके नॉर्मल सिंबल्स वगैरह, है ना, ये सारे क्या कहलाते हैं? प्लेन टेक्स्ट कहलाते हैं। साइफर टेक्स्ट क्या होगा? इट इज इंक्रिप्टेड टेक्स्ट which is converted by applying an algorithm on the plain text। किसी प्लेन टेक्स्ट के ऊपर किसी टाइप के एल्गोरिथम अप्लाई करके जिस टेक्स्ट को हम कन्वर्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं साइफर टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या है? इंक्रिप्शन यानी कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, एंड डिक्रिप्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ साइफर टेक्स्ट टू द प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं साइफर्स क्या होते हैं। प्लेन टेक्स्ट तो हमें पता है, नॉर्मल जो हम आजकल रीड करते हैं हर चीज प्लेन टेक्स्ट है ना। Yes. Let's discuss about the cipher text. तो cipher text क्या है? In cryptographic process, cipher are those encrypted texts which came through the algorithm process of encryption. यहाँ पे किसी न किसी तरीके की एक इंक्रिप्शन प्रोसेस यूज करके उसको क्या किया जाता है? एक एल्गोरिदम यूज करके इंक्रिप्शन की उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर? साइफर टेक्स्ट में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमारे पास सीजर साइफर, दिस इज द वन एंड वेरी ओल्ड टाइप ऑफ साइफर which came across the technique with the technique of encryption to plain text to cipher text, है ना। एक सीजर साइफर करके साइफर आता है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अगर सीजर साइफर works by adding or subtracting 3 characters of the particular number, that means if the plain text there is a character of E, either will be transmitted to B, and if the character is A, it will be transmitted to X। now how, किस तरीके से? now कहाँ गया?
अरे एग्जाम्पल ऐड किया था मैंने, एक मिनट रुको। Now you can see here this is the example। अच्छा इसके अंदर चलता क्या है, जैसे कि this cipher algorithm is having some mathematical equation which describe the functionality of the cryptography process। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमारे पास की जो है वो है ABCDEFGH IJKL MNOP QRST UVW YZ, टोटल 26 कैरेक्टर्स हैं। अब इंक्रिप्शन एल्गो जो यहाँ पे बनी वो क्या थी, सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 कैरेक्टर्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो इंक्रिप्शन के लिए हमारे पास प्लेन टेक्स्ट जैसे कि रचित था, ठीक, मैंने उसे साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, तो R की प्लेस पे, अब देखो यहाँ पे R कहाँ पे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 है, तो Q गया, R गया, Q गया, P गया, क्या बचा O, राइट, तो यहाँ पे O आ गया। सेम फिर उसके बाद क्या है A, अब देखो A को माइनस करो, Z को माइनस करो, Y को माइनस करो, क्या बचेगा X। फिर C, अब देखो C के लिए क्या किया, B गया, A गया, C गया, 3 गए, बचा क्या Z। H के लिए सेम एज इट इज, H को हटाओ, G को हटाओ, F को हटाओ, बचा क्या E, है ना, तो E आ गया। I के लिए I गया, H गया, G गया, बचा F। T के लिए सेम, T को हटाओ, S को हटाओ, R को हटाओ, बचा Q। So this is the cipher text which you have to convert it to apply the algorithm of the Caesar cipher। Clear? Yes. Okay। अब इसको अगर डिक्रिप्ट करना है तो इस साइफर के एल्गो को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, यानी इनवर्स करना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो मैं इसे जस्ट इनवर्स कर दूंगा, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की जगह एडिशन हो जाएगा, राइट। Yes. हाँ। ई वही पास होगी हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे जो O जो हमारे पास वो था पूरा, अब उसमें O में अगर मैं 3 प्लस करूं, यानी कि R. 1 2 3, तो तीसरे पे क्या मिला मेरे को R, राइट। Yes. ऐसे एक X की जगह पे A Y Z A क्या मिलेगा A, सेम CHIT हम आगे का क्रिएट कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सीजर साइफर। तो अगर मैं किसी आदमी को ये वाला इंक्रिप्टेड टेक्स्ट भेज दूं अपना नाम लिख के, तो क्या वो समझ पाएगा क्या लिखा है नॉर्मली? No. नहीं ना, उसे नहीं पता चलेगा ना एग्जैक्ट लेटर क्या है यहाँ पे, हाँ। है ना। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सीजर साइफर, दिस इज द वर्किंग प्रोसेस ऑफ सीजर साइफर आल्सो, कि किस तरीके से काम करता है। क्लियर? Okay. नाउ नेक्स्ट, अगर आप फर्दर एग्जांपल्स में और टाइप के साइफर्स को पढ़ना चाहते हो तो यू कैन लर्न एटलीस्ट, मतलब आपको वैसे अगर आप क्रिप्टोग्राफी फील्ड में जाओगे तो आपको एटलीस्ट कम से कम मिनिमम 10 साइफर्स तो पता ही होने चाहिए। ठीक है, उसमें सबसे पहला है जैसे कि क्लाइम साइफर, प्लेफेयर साइफर। ठीक है, ये क्या है, साइफर के टाइप्स हैं। सो अगर हम इन साइफर्स को देखें तो मैंने यहाँ पे डाला हिल क्लाइंब साइफर, एंड गीक और गीक्स आपको एक लिंक मिलेगा यहाँ पे वेबसाइट का, जस्ट ओपन दैट वेबसाइट। नाउ लुक एट हियर, ये आपको बता रहा है क्या हो गया, हिल क्लाइंब साइफर। Hill cipher is a polygraphic substitution cipher based on a linear algebra. Each letter is represented by a number of modulo 26. Often the simple schema A is equal to 0, B is equal to 1, Z is equal to 25, है ना, सबके letters। अच्छा, यहाँ पे जो indexing start होती है वो 0 से होती है, like A is equal to 1 नहीं है, A is equal to 0 है, तो Z is equal to 26 नहीं होगा, Z is equal to 25 होगा। ठीक है, तो सेम एज इट इज मॉडुलो 26 पे हमें बनानी है, तो हम n by n की मैट्रिक्स यहाँ पे बनाएंगे। तो मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट था वो था ACT एक्ट, एंड की जो थी हमारे पास वो ये थी। ठीक है, अब और साइफर टेक्स्ट जो इसका कन्वर्ट होके मिला था वो POX था। तो देखो साइफर टेक्स्ट कैसे बनाएंगे हम इसमें, यानी कि कैसे प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास की है, ठीक है, उस की को 3x3 की मैट्रिक्स में हम डिजाइन कर देंगे नंबर्स पे। तो जैसे G ABCDEFG, G आता है 7वें नंबर पे, बट इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होगी, 0 से, वो किस पे आ जाएगा 6। ठीक है, वैसे Y 25 पे आता है वो 24 पे हो जाएगा। जो B है वो आपका किस पे आता है
2 पे आता है बट 1 पे आ जाएगा, है ना। इस तरीके से हम एक हाँ, एक करके सारे नंबर्स को लिख देंगे रो वाइज, ओके। ठीक। फिर उसके बाद जो हमारे पास एक्ट है, एक्ट के अंदर कितने वो है नंबर, 3 है, हम्म, 3 कैरेक्टर या 3 नंबर। इनको भी हम कॉलम वाइज में लिख देंगे 0 to 19। a is equal to 0, c is equal to 2 and t is equal to 20 होता है बट 19, ठीक है। ओके। अब करना क्या है, दोनों को हम मैट्रिक्स करेंगे इनटू, मल्टीप्लिकेशन। एग्जैक्टली। ओके, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है एंड मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका क्या करना है, मॉडुलो निकाल देना है 26 पर। ओके। तो जब मॉडुलो निकालोगे तो 15, 14 एंड 7 मिलेगा, दैट इज द पीओएच। अब आप देख लो 15 जो होता है, पी जो होता है वो 16 पे आता है एबीसीडी में, है ना। बट यस, 0 से इंडेक्सिंग है तो किस पे मिलेगा हमें, 15 पे मिल जाएगा, राइट। यस। तो ये तो हो गया इंक्रिप्शन। अब इसका डिक्रिप्शन भी तो हमें पता होना चाहिए ना, कैसे करना है। तो डिक्रिप्शन पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास की थी, जो एक्चुअल में की थी, है ना, उस की को हम कर देंगे इनवर्स। उसकी क्या क्या निकाल देंगे, इनवर्स निकाल देंगे, ठीक है। ओके। इनवर्स मैट्रिक्स निकालने पे वो की जो हमें टोटल मिलेगा वो ये मिलेगा, और अल्फाबेट में और नंबर्स में हमें ये मिलेंगे, ठीक है, इनवर्स निकालने पर। ठीक है। इनवर्स की हो गई। अब पीओएच को सेम एज इट इज इनवर्स की के साथ इनटू कराएंगे। इनटू कराने पे जो मुझे मिलेगा उसका मॉडलो 26 पे दोबारा से निकाल देंगे रिजल्ट, और जैसे रिजल्ट निकालेंगे इट विल गिव मी द एक्ट, ओके। ठीक है, जो हमारा एग्जैक्टली प्लेन टेक्स्ट था। अब देखो ये प्रोसेस बहुत छोटा सा वर्ड था, एक्ट तो बड़े आसानी से हो गया क्योंकि मैट्रिक्स थी। अब एक चीज सोचो, इतने छोटे छोटे वर्ड्स तो मिलते नहीं है इंक्रिप्शन में, पूरा हाँ एक जी। सेंटेंस हो सकता है, हाँ। राइट। तो उस केस के लिए आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए इसकी। ओके। अगर आप जा रहे हो किसके अंदर, अपने क्रिप्टोग्राफी फील्ड में, तो ठीक है, तब आपको वहां पे प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, जिसमें अलग अलग टाइप्स के प्रोग्रामिंग लेवल्स यहाँ पे दे रखे हैं, लाइक सी प्लस प्लस का कोड दे रखा है, जावा का दे रखा है, पाइथन का दे रखा है, सी हैश का दे रखा है, ठीक है। तो हर ओके। कोडिंग लैंग्वेज का यहाँ पे कोड दे रखा है। यू जस्ट सिलेक्ट द कोड एंड रन द कोड एंड यू कैन चेक कि यहाँ पे क्या रिजल्ट मिल रहा है मुझे। अलग अलग वो टाइप करो, नंबर्स लेटर्स टाइप करो और उनका देखो रिजल्ट क्या आता है, ठीक है, ओके। क्लियर। क्लियर, क्लियर। बढ़िया। अब इसी तरीके से आप नीचे आ जाना, इसमें यहाँ पे ना आपको बहुत सारे साइफर मिलेंगे, टाइप्स ऑफ साइफर। तो इसमें एटलीस्ट आपको 5 साइफर तो पढ़ने ही पढ़ने हैं अभी, ठीक ओके। है। दिस इज अ होमवर्क। तो वैसा होमवर्क तो चेक करने के लिए नहीं हूं मैं, बट स्टिल यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, ठीक है। तो प्ले हाँ फेयर जी। साइफर, अब जैसे कि ये वाला साइफर था हिल क्लाइंब साइफर, जो हमारा क्या था, न्यूमेरिक वैल्यूज पे चल रहा था, है ना। अब हाँ। प्ले फेयर साइफर की अगर मैं बात करूं, ये कंप्लीटली ग्राफिकल बेस पे चलता है। जैसे कि प्ले फेयर साइफर में क्या होता है, ये इन्वेंटेड हुआ था 1984 में, किस टाइम पे, जिस टाइम पे आपका वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। तो उस समय क्या था, डेटा ट्रांजिशन के टाइम पर कंप्यूटर्स तो होते नहीं थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, है ना। हाँ जी। बट डेटा तो एन्क्रिप्ट करके भेजना है। अब इतना टाइम भी नहीं है कि वहां पे कोई कैलकुलेटर या वैसा कुछ लेके बैठा हो जो इतना ज्यादा डेटा को क्या करे, एन्क्रिप्ट डिक्रिप्ट करता बैठे इनटू मैट्रिक्स लगाए, है ना। हाँ। तो यस। उसके लिए ग्राफिकल फॉर्मेट निकाला अपना, क्या कहते हैं, डेटा एन्क्रिप्ट करने का, दैट इज कॉल्ड अ प्ले फेयर साइफर, ठीक है। ताकि जो नॉर्मल एक सिपाही भी है, एक नॉर्मल सैनिक भी है, वो भी उसको क्या कर सके, अप्लाई कर सके, यूज कर सके, ठीक है। ओके। तो उस चीज के लिए जो की यूज करी गई वो जैसे था मोनारिची, दैट इज अ की, एंड अ प्लेन टेक्स्ट दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स। क्या मिला हमें, प्लेन टेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट्स एंड की दैट इज अ मोनारिची, ओके। ओके, नाउ थोड़ा सा नीचे कर लो। अब प्ले फेयर साइफर अगर आप देखोगे, जनरेटेड अ की स्क्वायर 5 by 5। अब देखो मोनार्ची को हमें क्या करना है, अलग अलग डिवाइड कर लेना है। अच्छा, इस साइफर में क्या होता है, ये 5 by 5 की मैट्रिक्स बनती है, तो टोटल अल्फाबेट 25 भी यूज हो सकते हैं, राइट। यस। तो उस केस में हम जे को जो है निग्लेक्ट कर देते हैं, जे को हटा देते हैं।
बट समटाइम्स क्या होता है कि अगर जैसे कि आपका जो प्लेन टेक्स्ट है उसके अंदर जे आ रहा है कहीं पर भी, ठीक है, तो उसे हम एज अ रिप्लेस कर देंगे एल से। ओके। ठीक है, तो हम जे को रिप्लेस कर देंगे किससे, एल से। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे 5x5 के मैट्रिक्स हमने डिजाइन करी, जिसमें सबसे पहले मोनारिची जो हमारी की थी, उस की को हमने डाल दिया MONARCHY, राइट। बाकी के जितने अल्फाबेटिक बच्चे जे को छोड़कर उन सारे अल्फाबेटिक को आप डाल दोगे, लाइक ए यूज हो चुका है तो बी, सी यूज हो चुका है तो डी, ई एफ जी एच यूज हो चुका है तो आई, जे डालना नहीं है, के एल एम एन यूज हो चुका है तो पी, क्यू आर एस आर यूज हो चुका है तो एस एंड टी, एंड यू वी डब्ल्यू एक्स वाई यूज हो चुका है तो जेड। ठीक है, तो 5x5 के मैट्रिक्स बना दोगे। Now, उसके बाद क्या करना है, जितना भी आपके पास जो प्लेन टेक्स्ट था उसके सेगमेंट्स बना लो। सेगमेंट्स यानी कि पेयर बना लो, कितने कितने के, दो दो के पेयर हम डिजाइन कर लेंगे लाइक इंस्ट्रूमेंट्स में। अब इसमें एक रूल होता है कि अगर जो आपके पेयर है वो उसमें कोई ऑड नंबर रह जाता है, लाइक जैसे कि एस जो है वो अकेला रह जाएगा, तो उसकी इसमें हम जो लास्ट अल्फाबेट है दैट इज अ जेड, वो क्या करेंगे इसके साथ अटैच कर देंगे। डाउन कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो जेड को अगर हम अटैच कर देंगे तो सबके पेयर बन जाएंगे, राइट। यस। अब इन पेयर्स को हम चेक करेंगे। किस तरीके चेक करना है, इफ द बोथ लेटर आर ऑन द सेम कॉलम, अगर दोनों लेटर जो है, लाइक मैंने लिया एम ई, ठीक है, एम ई अगर सेम कॉलम के अंदर आ रहे हैं, लाइक एम बी आ रहा है और ई भी आ रहा है, देखो सेम कॉलम में है, तो उस केस में एफ रिप्लेस हो जाएगा सी के साथ एंड ई रिप्लेस हो जाएगा एल के साथ। ओके। तो वहां पे क्या होगा कि आपका रिप्लेसमेंट चलेगा। तो ये जो था ना, ये वर्ड वॉर 2 पे बहुत इजीली हम यूज कर पाते थे इस चीज को। ठीक है। ठीक है, क्योंकि उस समय आप खुद सोचो, अगर इस टाइप का अगर कोई इंक्रिप्शन यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन तो देखो है नहीं, राइट। कोई अगर नॉर्मल एक सैनिक है, सिपाही है, उसको पढ़ना पड़े, उसको देखना पड़े, तो क्या वो समझ पाएगा क्या है मैथमेटिकल इक्वेशन लगाने के लिए दे दी जाए, बेचारा नहीं कर पाएगा नहीं। ना। नहीं। तो उस केस के लिए हम क्या करते थे कि हमने ग्राफिकल यूज किया, दैट इज अ प्लेन वेयर साइफर। क्लियर। क्लियर अब क्लियर। अगर दोनों सेम कॉलम में नहीं होते हैं तो क्या कंडीशन बन सकती है, इफ बोथ लेटर आर ऑन द सेम रो, अगर दोनों लेटर किस केस में है, सेम रो में है। ठीक है, तो सेम रो में इन द सेंस जैसे कि एच टी ऑन द सेम रो, देखो एक ही रो में है, तो एस इज यस। रिप्लेस टू द नेक्स्ट लेटर दैट इज अ टी एंड टी इज रिप्लेस टू द नेक्स्ट लेटर दैट इज अ एल। तो एस को हम रिप्लेस कर देंगे टी के साथ और टी को रिप्लेस कर देंगे एल के साथ। क्लियर। यस। अब अगर दोनों ही केस नहीं बनते हैं, ना ही वो सिंगल रो में है सेम रो में, ना ही वो सेम कॉलम में है, सो हम क्या करेंगे वहां पर, सो इफ नाइदर और अबव रूल इज ट्रू, दोनों में से कोई ट्रू नहीं होता, तो हम वहां पे क्रिएट करेंगे रेक्टेंगल फॉर्मेट बिटवीन द टू लेटर्स। ठीक है, ओके। तो रेक्टेंगल कैसे बनाना है, ये देखो, जैसे एनटी था, तो एन मुझे यहां मिल रहा है, टी मुझे यहां मिल रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाएंगे किसके लिए, एन टी के बीच का। तो पहला रेक्टेंगल बनेगा सीधा, दूसरा बनेगा उल्टा। तो पहला रेक्टेंगल जब सीधा बनाओगे तो उस केस में क्या होगा, एन आर टी मिल रहा है हमें, क्रॉसवर्ड यस। क्या है, आर है, तो एन का हाँ। क्रॉसवर्ड क्या मिल रहा है हमें, सेम रो में आर मिल रहा आर। है, तो दिस इज हाँ। द एन कन्वर्जन ऑफ आर। ठीक है, एन को रिप्लेस करेंगे आर से, एंड जब हम एन और टी के बीच में जब टी का रो देखेंगे तो हमें दोनों का क्रॉस मिल रहा है क्यू, तो टी को हम क्रॉस कर देंगे क्यू के साथ या रिप्लेस कर देंगे क्यू के साथ। ओके। ठीक है, सो इस तरीके से हम सारे रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ लुक एट हियर, देख रहे हैं ना। यस। तो दिस इज द फॉर्मेट वर्तिका, कि हम किस तरीके से प्लेफेयर साइफर को यूज करते थे इंक्रिप्शन में, यानी कि हम अपने डेटा को सिक्योर कर सकते थे बाय द यूजिंग ऑफ प्लेफेयर साइफर। क्लियर। क्लियर क्लियर। अब इसका कोड देखो नीचे दे रखा है, यू कैन रीड इट द कोड, इफ यू हैव ए नॉलेज अबाउट द सी लैंग्वेज तो आप कोड समझ सकते हो एंड कोड को यूज कर सकते हो। ठीक है, यस। बढ़िया। सो मैंने आपको दो साइफर, एक्चुअली तीन साइफर समझाए हैं। एक सीजर साइफर बताया आपको कैसे काम करता है, एक इन हेल्पलाइन हेल्पलाइन साइफर कैसे में। काम करता है, और एक आपका प्लेफेयर साइफर कैसे काम करता है, राइट। यस। यस।
उसके बाद आपके नीचे और कोई साइफर मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइफर्स और भी हैं, तो यू हैव टू रीड एटलीस्ट 5 मोर आई साइफर्स, सी। ठीक है। ओके। अच्छा, डिक्रिप्ट करने के लिए भी सेम प्रोसीजर है। देखो, डिक्रिप्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने मोनालिटी सेम एज इट इज लिखा, जो हमारे पास की थी, जो हमें कन्वर्ट होके मिला, उसमें हमें सेम वही उनके दो दो के सेक्शन बनाने, ग्रुप बनाने, हाँ। स्प्लिट करना उन्हें, एंड स्प्लिट करने के बाद उनको सेम एज इट इज सेम प्रोसीजर से कन्वर्ट कर देंगे जो उनके में मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमें मिल रहा था Cl, ठीक है। तो Cl का जो, अब देखो यहाँ पे जो कन्वर्जन है उसमें हमने यूज किया था नेक्स्ट लेटर, ठीक है। हाँ। यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रीवियस लेटर, प्रीवियस लेटर्स। में यूज होगा प्रीवियस लेटर। तो प्रीवियस लेटर में C का प्रीवियस क्या है M, और L का प्रीवियस क्या है E, है ना। वैसे ही S, T का प्रीवियस है S एंड L का प्रीवियस है T, हाँ। तो प्रीवियस चलेगा यहाँ पे, रिवर्स। हाँ। ठीक है। यस। देखो, तो आर का क्रॉसवर्ड हमें अभी एन मिल गया। ठीक है। यस यस। तो यहाँ पे अब हम रिवर्स कंडीशन यूज कर लेंगे। हाँ। तो आपने एक चीज देखी होगी, जितने भी टाइप के हम साइफर डिजाइन करते थे उन सारे साइफर्स के अंदर एक चीज बड़ी कॉमन थी कि जब इंक्रिप्शन करते हैं और जब डिक्रिप्शन करते हैं तो इनवर्स प्रोसीजर यूज हो जाता यस। है ना। तो सब में यही है। देखो, हमने पहले वाले सीजर जब पढ़ा तो उसमें भी पहले इंक्रिप्ट किया गया सब्ट्रैक्ट के थ्रू, है ना, और जब हमने यस। डिक्रिप्ट किया तो उसमें एडिशन कर दिया। सेम जब हमने लास्ट वाले में किया हिल क्लाइंब में, तो जब उसके मैट्रिक्स को हमने पहले इन्वर्स किया डिक्रिप्शन के टाइम पर, देन उसको हमने क्या किया, कन्वर्ट किया प्लेन टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। सेम एज इट इज जो ये वाला है आपका प्ले फेयर साइफर, इसमें भी हमने क्या किया, जो नेक्स्ट कंडीशन थी उसकी रिप्लेसमेंट में हमने प्रीवियस कंडीशन यहाँ पे यूज करी, यस। राइट। सो राइट। ये आपके साइफर्स के हैं। आई होप आपको साइफर क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके हाँ से चलता क्लियर है, है। है ना? बढ़िया। When we talk about the algorithm of the encryption algorithms, these are the types of standards of modulation on which the encryption is going on, like AES, Advanced Encryption Standard, DES, Data डेटा Encryption, एन्क्रिप्शन। and RSA, that is a Ravest Shamir Eldman Encryption Standard, ठीक है। तो तीन तरीके के इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड यूज होते हैं। आपने देखा है डीईएस कैसे यूज होता था, जब मैंने आपको बताया था उसमें वाईफाई हैकिंग में, है ना, वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग में डीईएस कैसे काम करता है। एईएस के अंदर हमें क्या मिल जाता है एक्स्ट्रा, आरएसए, जो हम अभी देखेंगे, ठीक है। ओके। नाउ साइफर्स के बाद आपके आते हैं की सिस्टम। अब जो हम की दे रहे हैं वो की सिस्टम भी तो कुछ टाइप के होंगे ना, है ना। तो की में क्या है, a cryptographic key is that bit use of data which are used by the cryptographic algorithm for converting plain text into a cipher text or a vice versa. They are mainly of a two types. यानी कि जो आप कन्वर्ट करने के लिए यूज कर रहे हो इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के लिए, उसके लिए जो की पास हो रही है ना, वो दो टाइप की है। पहली की सिमेट्रिक एंड कहते एसिमेट्रिक। हैं पब्लिक की, जो आज के टाइम पे यूज होती है सबसे ज्यादा। यस। दूसरी आपकी की थी जो सिमेट्रिक की थी, जिसे हम कहते थे प्राइवेट की। सेम की। हाँ। एक लाइन में एग्जांपल बताता हूँ फिर वीडियो देखेंगे सिमेट्रिक की का क्या है। सिमेट्रिक की जो होती थी, सिमेट्रिक कीज एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम यूज अ सिंगल सिमेट्रिक की फॉर बोथ एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इज अ प्राइवेट की कैप। एक ताला है लॉक, उसमें जिस ताले की चाबी से आपने बंद किया उसी से खुलेगा, यस। ठीक है। तो ये है सिमेट्रिक की यानी कि प्राइवेट की, ठीक। अगर मैंने किसी ताले पे लॉक लगा दिया और चाबी मेरे पास है, जब तक मैं चाबी आपको नहीं दूंगा तब तक वो ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा है असिमेट्रिक की। असिमेट्रिक की का बेस्ट एग्जांपल है असिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम कॉल्ड एज अ पब्लिक की बाय द टू डिफरेंट की बट रिलेटेड की। द एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इज पब्लिकली प्रोवाइडेड बाय द वेब सर्वर। अब इसमें क्या है कि बैंक में हम लॉकर खरीदते हैं, लॉकर होते हैं बैंक में, यस। उसमें दो की होती हैं। एक की जो होती है वो पर्टिकुलर किसके पास होती है, आपके मैनेजर के पास, और एक की होती है जो यूजर होता है, क्लाइंट होता है, उसके पास, ठीक है। अब इस केस में ऐसे समझो कि जो क्लाइंट है वो दो हैं,
ठीक, दोनों का एक ही की है, सेम की है, राइट। बट जब तक वो वाली पब्लिक की जो है, जो उसके पास अवेलेबल है, क्या कहते हैं, आपके मैनेजर के पास, जब तक वो नहीं लगाएगा तब तक आप ओपन नहीं कर पाओगे, राइट। Yes. So this is a type of encryption, asymmetric encryption, that is called a public key cryptography. Clear? So let's see Yes. the video. So we will understand very quickly कि किस तरीके से ये काम करता है. Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. Let's look at how business. Encryption is the process of taking a message and scrambling its contents so that only certain people can look at your message. There are two types of encryption, symmetric and asymmetric encryption. Let's first take a look at symmetric encryption to understand why asymmetric encryption was created. To do that, let me introduce you to Alice and Bob. Alice has a sensitive document that she wants to share with Bob. She uses an encryption program to protect her document with a password or passphrase that she chooses. She then sends the encrypted document to Bob. However, Bob cannot open this message because he doesn't know the passphrase that Alice used to encrypt the document. In other words, he doesn't have the key to open the lock. Now comes a real problem. How does Alice share this passphrase securely with Bob? Sending it through email is risky because others might find the passphrase and use it to decrypt any messages between Alice and Bob. This is exactly the kind of problem that asymmetric encryption intends to solve. It is comparable to a mailbox on the street. The mailbox is exposed to anyone who knows its location. We can say that the location of the mailbox is completely public. Anyone who knows the address can go to the mailbox and drop in a letter. However, only the owner of the mailbox has a key to open it up and read the messages. So let's now go back to technical details. When using asymmetric encryption, both Alice and Bob have to generate a key pair on their computers. A popular and secure way for doing this is by using the Rsa algorithm. This algorithm will generate a public and private key that are mathematically linked to each other. Public keys can be used to encrypt data, and only the matching private key can be used to decrypt it. Even though the keys are linked together, they cannot be derived from each other. In other words, if you know someone's public key, you cannot derive his private key. If we retake our mailbox example, then the mailbox's address would be the public key, something that everyone is allowed to know. The owner of the mailbox is the only one who has the private key, and that is needed to open up the mailbox. Let's now take a look at how Alice and Bob can use asymmetric encryption to communicate securely with each other. They start by exchanging their public keys. Bob gives his public key to Alice, and Alice gives her public key to Bob. Now Alice can send her sensitive document again. She takes the document and encrypts it with Bob's public key. She then sends the file to Bob, who uses his private key to unlock the document and read it. Because they use asymmetric encryption, only Bob is able to decrypt the message. Not even Alice can decrypt it because she doesn't have Bob's private key. The strength and security of the asymmetric encryption now relies on Alice and Bob to keep their private keys well protected. If an attacker steals Alice's private key, it can be used to decrypt all messages that are intended for Alice. However, the attacker cannot decrypt messages that were sent by Alice because that requires Bob's private key. Asymmetric encryption is used in a lot of places where security really matters. You might not be aware of it, but every time you visit a secure website via HTTPS, you're actually using asymmetric encryption. It's also being used to securely send emails with the PGP protocol. And one last example, Bitcoin also uses asymmetric encryption to make sure that only the owner of a money wallet can withdraw or transfer money from it. So now you know how asymmetric encryption works and what the differences are between asymmetric and symmetric encryption.
If you like this video, consider supporting me by sharing. सर में आया वर्तिका? हाँ आ गया। क्लियर हो गया ना? अब क्लियर। RSA जो पब्लिक की में RSA इंक्रिप्शन यूज किया जाता है वो कैसे चलता है? %60 of jobs that exist today won't exist in 7 years' time. Basically, any job that doesn't involve it. Up until the 1970s, cryptography had been based on symmetric keys. That is, the sender encrypts their message using a specific key, and the receiver decrypts using an identical key. As you may recall, encryption is a mapping from some message using a specific key to a ciphertext message. To decrypt the ciphertext, you use the same key to reverse the mapping. So, for Alice and Bob to communicate securely, they must first share identical keys. However, establishing a shared key is often impossible if Alice and Bob can't physically meet, or requires extra communications overhead when using the Diffie-Hellman key exchange. Plus, if Alice needs to communicate with multiple people, perhaps she's a bank, then she's going to have to exchange distinct keys with each person. Now she'll have to manage all of these keys and send thousands of messages just to establish them. Could there be a simpler way? In 1970, James Ellis, a British engineer and mathematician, was working on an idea for non-secret encryption. It's based on a simple yet clever concept. Lock and unlock are inverse operations. Alice could buy a lock, keep the key, and send the open lock to Bob. Bob then locks his message and sends it back to Alice. No keys are exchanged. This means she could publish the lock widely and let anyone in the world use it to send her a message. And she now only needs to keep track of a single key. Ellis never arrived at a mathematical solution, though he had an intuitive sense of how it should work. The idea is based on splitting a key into two parts, an encryption key and a decryption key. The decryption key performs the inverse or undo operation, which was applied by the encryption key. To see how inverse keys could work, let's do a simplified example with colors. How could Bob send Alice a specific color without Eve, who is always listening, intercepting it? The inverse of some color is called a complementary color, which when added to it produces white, undoing the effect of the first color. In this example, we assume that mixing colors is a one-way function because it's fast to mix colors and output a third, and it's much slower to undo. Alice first generates her private key by randomly selecting a color, say red. Next, assume Alice uses a secret color machine to find the exact complement of her red, and nobody else has access to this. This results in cyan, which she sends to Bob as her public key. Let's say Bob wants to send a secret yellow to Alice. He mixes this with her public color and sends the resulting mixture back to Alice. Now, Alice adds her private color to Bob's mixture. This undoes the effect of her public color, leaving her with Bob's secret color. Notice Eve has no easy way to find Bob's yellow since she needs Alice's private red to do so. This is how it should work. However, a mathematical solution was needed to make this work in practice. The solution was found by another British mathematician and cryptographer, Clifford Cox. Cox needed to construct a special kind of one-way function called a trapdoor one-way function. This is a function that is easy to compute in one direction, yet difficult to reverse unless you have special information called the trapdoor.
For this, he turned to modular exponentiation, which we introduced as clock arithmetic in the Diffie-Hellman key exchange, as follows. Take a number, raise it to some exponent, divide by the modulus, and output the remainder. This can be used to encrypt a message as follows. Imagine Bob has a message which is converted into a number, m. He then multiplies his number by itself e times, where e is a public exponent. Then he divides the result by a random number n and outputs the remainder of the division. This results in some number c. This calculation is easy to perform. However, given only c, e, and n, it is much more difficult to determine which m was used because we'd have to resort to some form of trial and error. So this is our one-way function that we can apply to m. Easy to perform, but difficult to reverse. It is our mathematical log. Now, what about the key? The key is the trap door, some piece of information that makes it easy to reverse the encryption. We need to raise the key to some other exponent, say d, which will undo the initial operation applied to m and return the original message m. So both operations together is the same as m to the power of e, all raised to the power of d, which is the same as m to the power of e times d. E is the encryption, d is the decryption. Therefore, we need a way for Alice to construct E and D, which makes it difficult for anyone else to find D. This requires a second one-way function which is used for generating D. And for this, he looked back to Euclid. Over 2,000 years ago, Euclid showed every number has exactly one prime factorization, which we can think of as a secret key. It turns out that prime factorization is a fundamentally hard problem. Let's clarify what we mean by easy and hard by introducing what's called time complexity. We have all multiplied numbers before, and each of us has our own rules for doing so in order to speed things up. If we program a computer to multiply numbers, it can do so much faster than any human can. Here is a graph that shows the time required for a computer to multiply two numbers. And of course, the time required to find the answer increases as the numbers get larger. Notice that the computation time stays well under 1 second, even with fairly large numbers. Therefore, it is easy to perform. Now compare this to prime factorization. If someone told you to find the prime factorization of 589, you will notice the problem feels harder. No matter what your strategy, it will require some trial and error until you find a number which evenly divides 589. After some struggle, you will find 19 times 31 is the prime factorization. If you were told to find the prime factorization of 437,231, you'd probably give up and get a computer to help you. This works fine for small numbers, though if we try to get a computer to factor larger and larger numbers, there is a runaway effect. The time needed to perform the calculations increases rapidly as there are more steps involved. As the numbers needs minutes, then hours, and eventually it will require hundreds or thousands of years to factor huge numbers. We therefore say it is a hard problem due to this growth rate of time needed to solve it. So factorization is what Cox used to build the trapdoor solution. Step 1. Imagine Alice randomly generated a prime number over 150 digits long. Call this P1. Then a second random prime number roughly the same size. Call this P2. She then multiplies these two primes together to get a composite number n, which is over 300 digits long. This multiplication step would take less than a second. We could even do it in a web browser. Then she takes the factorization of n, P1 times P2, and hides it. Now, if she gave n to anyone else, they would have to have a computer running for years to find the solution. Step 2. Cox needed to find a function which depends on knowing the factorization of n. For this, he looked back to work done in 1760 by Swiss mathematician Leonhard Euler.
Euler continued to investigate properties of numbers, specifically the distribution of prime numbers. One important function he defined is called the Phi function. It measures the breakability of a number. So given a number, say n, it outputs how many integers are less than or equal to n that do not share any common factor with n. For example, if we want to find the phi of 8, we look at all values from 1 to 8. Then we count how many integers 8 does not share a factor greater than 1 with. Notice 6 is not counted because it shares a factor of 2, while 1, 3, 5, and 7 are all counted because they only share a factor of 1. Therefore, phi of 8 equals 4. What's interesting is that calculating the phi function is hard except in one case. Look at this graph. It is a plot of values of phi over integers from 1 to 1,000. Now, notice any predictable pattern. The straight line of points along the top represent all the prime numbers. Since prime numbers have no factors greater than 1, the phi of any prime number, p, is simply p minus 1. To calculate phi of 7, a prime number, we count all integers except 7, since none of them share a factor with 7. Phi of 7 equals 6. So if you were asked to find phi of 21,377, prime number, you would only need to subtract 1 to get the solution, 21,376. Phi of any prime is easy to compute. This leads to an interesting result based on the fact that the phi function is also multiplicative. That is, phi a times b equals phi a times phi b. If we know some number n is the product of two primes, p1 and p2, then phi of n is just the value of phi for each prime multiplied together, or p1 minus 1 times p2 minus 1. We now have a trapdoor for solving phi. If you know the factorization for n, then finding phi n is easy. For example, the prime factorization of 77 is 7 times 11. So phi of 77 is 6 times 10, 60. Step 3, how to connect the phi function to modular exponentiation. For this, he turned to Euler's theorem, which is a relationship between the phi function and modular exponentiation as follows. M to the power of phi n is congruent to 1 mod n. This means you can pick any two numbers such that they do not share a common factor. Let's call them m and n. Say m equals 5 and n equals 8. Now, when you raise m to the power of phi n, or 4, and divide by n, you will always be left with 1. Now, we just need to modify this equation using two simple rules. First, if you raise the number 1 to any exponent k, you always get 1. In the same way, we can multiply the exponent phi n by any number k, and the solution is still 1. Second, if you multiply 1 by any number, say m, it always equals m. In the same way, we can multiply the left side by m to get m on the right-hand side. And this can be simplified as m to the power of k times phi n plus 1. This is the breakthrough. We now have an equation for finding E times D, which depends on phi n. Therefore, it's easy to calculate D only if the factorization of n is known. Meaning D should be Alice's private key. It's the trapdoor which will allow her to undo the effect of E. Let's do a simple example to see all of this in action. Say Bob has a message he converted into a number using a padding scheme. Let's call this M. Then Alice generates her public and private key as follows. First, she generates two random prime numbers of similar size and multiplies them to get n, 3,127. Then she calculates phi of n easily since she knows the factorization of n, which turns out to 3,016. Next, she picks some small public exponent e, with the condition that it must be an odd number that does not share a factor with phi n. In this case, she picks e equals 3. Finally,
She finds the value of her private exponent d, which in this case is 2 times phi of n plus 1 divided by 3, or 2011. Now, she hides everything except the value of n and e, because n and e make up her public key. Think of it as an open lock. She sends this to Bob to lock his message with. Bob locks his message by calculating m to the power of e mod n. Call this C, his encrypted message, which he sends back to Alice. Finally, Alice decrypts his message using her private key, D, accessed through her trapdoor. C to the power of D mod n equals Bob's original message M. Notice that Eve, or anyone else with C, N, and E, can only find the exponent D if they can calculate phi n, which requires that they know the prime factorization of n. If n is large enough, Alice can be sure that this will take hundreds of years even with the most powerful network of computers. This trick was immediately classified after its publication. However, it was independently rediscovered in 1977 by Ron Rivas, Adi Shamir, and Len Edelman, which is why it's now known as Rsa Encryption. RSA is the most widely used public key algorithm in the world and the most copied software in history. Every internet user on Earth is using RSA or some variant of it, whether they realize it or not. Its strength relies on the hardness of prime factorization, which is a result of deep questions about the distribution of prime numbers, a question which has remained unsolved for thousands of years. कुछ हुआ क्लियर बाकी? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, मतलब कंप्लीट वो मैथमेटिकल वाला पोर्शन थोड़ा समझ आया। लास्ट में जब वो पूरा प्रोसेस समझा रहा था तब ज्यादा बेटर तरीके से समझ आया। अब आप इसको ना दोबारा देखना ना एक बारी तो ज्यादा ज्यादा बेटर से समझ में आएगा। हाँ, क्योंकि एक बार में इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता ना, हमारा माइंडसेट वहां नहीं पहुंच पाता है। कोई दोबारा देखोगे तो यू हैव टू क्लियर दैट थिंग्स। ओके। और अगर आप इंक्रिप्शन फील्ड में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको ये कंप्लीट रीड आउट करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, नाउ सिमेट्रिक की पढ़ लिया हमने। नाउ लेट्स द एग्जांपल ऑफ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्टेगनोग्राफी। क्या है हमारे पास? स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी आपने पहले भी शायद वर्ड कभी सुना होगा। पहले लोग क्या करते थे, स्टेगनोग्राफी जो है वो होता है चित्रकला, ठीक है? मतलब अपना डेटा को एक तरीके से हाइड करना, किस फॉर्मेट में? ड्राइंग्स के फॉर्मेट में, ठीक है, रिप्रेजेंट करना, उसे स्टेगनोग्राफी बोलते थे। बट यहाँ पे हम ड्राइंग तो बनाएंगे नहीं सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी डेटा को बिहाइंड एनी डेटा, किसी भी अनदर डेटा के पीछे हम क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। लाइक टेक्स्ट फाइल के डेटा को वी कैन हाइड बिहाइंड किसके, नंबर फाइल्स, किसी भी फाइल के पीछे, लाइक ऑडियो, वीडियो, सम टाइप ऑफ मीडिया फाइल्स के पीछे हम उन्हें क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, ठीक है? So steganography is the process in which we are basically hide the data inside a data. This is the process in which the data is hidden into a plain sight or an image, audio or video file. This process can also be used along with the cryptography as an extra secure method in which to protect data. So one of the most famous and simplest technique of steganography is the least significant base technique that is called as a LSB, ठीक है? तो हम इस प्रोसीजर का यूज करेंगे। कैसे किया जाता है? सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई इमेज फाइल आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ images.jpg। So now you can see here एक इमेज है यहाँ पे पांडा की, ठीक है? तो I'm just going to download this panda image। मैं इसे डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, website.jpg नाम से आ रही है। मैं इसका नाम यहीं पे चेंज कर देता हूँ, panda.jpg, ठीक है? ओके, डाउनलोड हो गई फाइल मेरे पास। कहाँ गया डेस्कटॉप? डेस्कटॉप, ये रही, ठीक है? नाउ अब आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ जो कि txt फाइल होगी, ठीक?
तो जस्ट ओपन द txt फाइल एंड जैसे उसका नाम दे देता हूँ न्यू फाइल। ओके, कुछ भी आपके ऊपर है। न्यू फाइल डॉट txt, जस्ट मैंने इसे ओपन किया और यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया हेलो यूजर एंड कॉमा यू आर माय नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, मैंने एक मैसेज यहाँ पे लिखा है हेलो यूजर यू आर माय नेक्स्ट टारगेट और इसको एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल देते हैं पूरे को। ठीक है, नाउ सेव कर दिया, कंट्रोल एस एंड जस्ट बैक। मेरे पास दो फाइल हो गई, एक पांडा डॉट जेपीजी, एक न्यू फाइल डॉट txt फाइल। एक मिनट करना। हाँ, तो मेरे पास दो फाइल आ गई, पांडा डॉट जेपीजी एंड न्यू फाइल डॉट txt। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या करना है, अब मुझे ओपन करना है अपना CMD ओपन करके CD डेस्कटॉप पे स्विच कर लेते हैं कि हमारा सब कुछ कहाँ पड़ा है, डेस्कटॉप पे दोनों चीजें। अब आपको यहाँ पे कमांड यूज करना है, दैट इज अ कॉपी स्लैश स्पेस स्लैश बी, बाइंड कर दो। ठीक है, कॉपी करो एंड बाइंड कर दो किसको, पांडा डॉट जेपीजी को, प्लस किसके साथ बाइंड करना है हमें, न्यू फाइल डॉट txt के साथ। और न्यू फाइल बना दो, इसका नाम दे देता हूँ क्यूट पांडा डॉट जेपीजी। ठीक है, ओके, एंड वन फाइल कॉपी दिखा रहा है, कंफर्म हुआ। Now look at here, there is a one another file which is generated with the name of cute panda। देख रही है ना? हाँ जी, है ना? अब देखो दोनों में कोई डिफरेंस लग रहा है? Now let's नहीं, साइज फर्स्ट, साइज कितना है, 101 KB का है। ठीक है, हाँ, इसका साइज कितना है, 101 KB का। Is there any difference? नहीं, नहीं है ना, बिल्कुल सेम है। नहीं, हाँ, बढ़िया, अब मैं इसे करता हूँ ओपन पांडा डॉट जेपीजी को। कोई डिफरेंस, बढ़िया ओपन हो रही है ना? यस, हाँ, डेस्कटॉप पे आके क्यूट पांडा वाली भी ओपन कर लेते हैं, कोई डिफरेंस? कुछ नहीं, बढ़िया ओपन। अब मैंने यहाँ पे क्यूट पांडा पे राइट क्लिक किया एंड मैंने इसे ओपन किया, ओपन विद नोटपैड। नीचे आ जाओ बिल्कुल एंड पे। ओके, So now look at here, here is our message that is hello user you are my next target। ओके, दिख रहा है? हाँ, अब दिख इसी रहा है, को मैं इंक्रिप्ट करके भेज दूं तो क्या पता चलेगा क्या लिखा है? नो, मिक्स हो जाएगा ना इसके साथ। यस, ये क्लियर हुआ? यस, अब आप कहोगे कि ये तो मैं ऐसे ही ऐड कर दूं, है ना? आनी ना मन में, हाँ, पूछना चाहिए ना। देखो अब अगर मैं इसे ऐसे ही ऐड करता हूँ, नोटपैड ओपन किया मैंने, वहां से अपनी टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। कौन सा था हमारे पास, क्यूट पांडा, क्यूट पांडा को ओपन, पांडा को केवल ओपन करते हैं एंड और यहाँ से न्यू फाइल वाली ओपन करके इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यस, ओके, एंड वहां पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, बिल्कुल एंड में यहाँ पेस्ट कर दें। हाँ, पेस्ट कर सिंपल, देते, कंट्रोल एस, सेव कर दिया मैंने, फाइल को हटा दिया। लुक एट हियर, क्या फाइल का आइकन आ रहा है? हाँ, फाइल का आइकन हो गया अभी, गायब हो गया। चलो ओपन हाँ, करते हैं पांडा डॉट जेपीजी, क्या लिख के आ रहा है? we cannot open this file, okay, हुआ क्लियर? हाँ, क्लियर हो गया, तो अब तो नहीं आ रहा कि ऐसे ही ऐड कर दें? हाँ, नहीं, बढ़िया, तो डिलीट कर देता हूँ मैं ये फाइल्स। ये कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कैसे कैसे यूज करना है, आई ऑलरेडी राइट हियर, सो आप यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, ओके, ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज ए हैशेस। अब हैशेस समझते हैं, अभी हमने साइफर टेक्स्ट समझा था, अब हैशेस समझेंगे। ठीक है,
दोनों में बस एक डिफरेंस है, आप साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज करके रिवर्ट बैक कर सकते हैं, बट हैशेस रिवर्ट बैक नहीं होते, रिवर्ट बैक नहीं होते। यस, हैशेस केवल मैच कराए जा सकते हैं। हाँ, अगर डेटाबेस में उसका हैश अवेलेबल है तो मैच मिलेगा और मैच के बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कौन सा हैश है ये। सेम, तो हाँ, यहाँ पे क्या है, it convert data into either alphanumeric form or a hex form, but there is a difference between cipher text and a hash. The difference is encrypted text can be reverted or further decrypted, but the hash cannot be reverted. We need to crack the hashes. So hashes function is that which takes an input, return a fixed size numerical this string is called as a hash value. Example of like MD5 hash, base 64 hash, encoding hash, decoding hash, SHA1, SHA256, HSA 512. These are all the types of hashes. ठीक है? हाँ, तो एक छोटी सी वीडियो फिर से. ठीक है. डोंट वरी, ये ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है हमारी. मैं जब तक इनको क्लोज कर देता हूँ. What is hashing and what does it do? Hashing is the process of converting the input of any length into a fixed size string of text using a mathematical function. This means that any text, no matter how long it is, can be converted into an array of numbers and letters through an algorithm. The message to be hashed is called input. The algorithm used to do so is called a hash function, and the output is called hash value. There are many formulas that can be used to hash a message, but a cryptographic hash function needs to have some qualities to be considered useful. Each hash value or output has to be unique. This means that it should be impossible to produce the same hash value entering different inputs, and therefore the same message should always produce the same hash value. The hashing speed is also an important factor. A hash function should be quick to produce a hash value. Finally, a hash function needs to be secure. It is extremely difficult, if not impossible, to determine the input based on the hash value, while the slightest change to an input should generate a hugely different hash. To represent the current state of a blockchain and to ensure its immutability. Every transaction contains certain bits of information, such as the amount being sent, the sending and receiving addresses, the timestamp, and so on. All of this information is combined into the formula to produce a hash called transaction ID. The transaction ID is a hash value that can be used to identify and confirm that a transaction has happened. The first block in a blockchain, known as a genesis block, contains transactions that, when combined, produce a unique hash. When the second block is created, the hash of the genesis block is added to all of the new transactions in the new block. This combination is used to create its respective hash. This process is repeated with all the new blocks being added to a blockchain, always taking previous hashes to generate the newer ones, creating an unbreakable dependency. This way, each block links back to its previous block through its hash, forming a chain back to the genesis block, which makes blockchain a secure, immutable, and transparent network. क्लियर हुआ? यस. अगर हम क्रैकिंग की बात करें, हैशेस को कैसे क्रैक कर सकते हैं, तो क्रैकिंग मेथड में हमारे पास क्या आता है, वी हैव टू क्रिएट अ डिक्शनरी एंड हैव टू कन्वर्ट every word into hash a particular word list, and after that we will compare it particular hash. If matches, it means that the specific word is found. Hashes are usually unique. ठीक है? यस. कैसे बनाना है, हमें पासवर्ड कैसे क्रैक करना है, उसका हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे अभी. उससे पहले एक और Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. Let's look at how business... You might have found out that there is a website that checks if your online accounts have been compromised by hackers. So you enter in your email address and oh no,
You have been pwned. Hackers now know the passwords that you used on all these services. But do they really know your password? Well, as it turns out, that might not actually be the case. And to understand why, let's take a look at what options companies have to protect your passwords and safely store them so that even when hackers get access to their systems, your password stays safe. There are three ways a company can store your password. They can store it in plain text, use encryption on it, or use what's called a hash function. Let's go quickly over each one of these, and let's start with the most basic one, plain text. This is obviously the most dangerous way of storing passwords. If hackers breach the company's database, they get to see all the passwords of the users. And since a lot of people have the bad habit of using the same password for multiple accounts, it's likely that one compromised password could lead to more compromised accounts. Now, you might think that companies aren't silly and that none of them store our passwords in plain text. However, you would be very wrong in thinking that. Past breaches have showed us that top companies with millions of users weren't adequately protecting passwords. A possible alternative to plain text storage is encryption. You take the password of the user and, before you store them, encrypt them with an encryption key. This would prevent hackers from obtaining the real password of users, but it's still quite risky. Underneath the encryption layer is still a plain text password. And so if an attacker manages to steal the encryption key as well, he can unlock all the passwords. The problem with encryption is that it is designed to work in two ways. You can encrypt the user's password to keep it safe, but you can also decrypt it to reveal the password again. Encryption is very practical when you want to share data in a secure way, but not great if you want to prevent hackers from breaching your password. And that brings us to the third technique of storing passwords, and that's by using a hash function. How does that work? Well, a hash function takes an input that could be a piece of text like your password, or it could be a file, and it turns that into a string of text that always has the same length. There are many different hash functions available, but this is what the SHA-3 hash of Hello World looks like. Hash functions are very different from encryption because they only work in one way. You can calculate the hash of a password, but you cannot take a hash and turn it back into the original data. And that is an interesting property to have. By using hashes, companies can verify that you're logging in with the correct password without having to store your actual password. However, they aren't perfect either. Most hashing algorithms are optimized for speed. The more hashes per second they can calculate, the better. And that makes them vulnerable against brute force attacks. By simply calculating every hash of every possible password, an attacker can reverse the hash function. A modern GPU can do this with the speed of 292 million hashes per second, so it's only a matter of time before a hashed password is cracked using this technique. And if that's not fast enough, hackers can also use rainbow tables to further accelerate the process. These are lists of pre-computed hashes that can be used to quickly find weak and commonly used passwords. The speed of a hash function is a positive thing in certain areas. However, when it comes to storing passwords, you don't want this property. And then there is a second problem, and that happens when users share the same password. If both Alice and Bob have the password QWERTY, the hashes of their passwords will be identical. So when a hacker cracks the hash of this password, he also knows the other. Now, you might think that's not a big deal because it's very unlikely that different people will use the same password. Well, think again. The password QWERTY has been found more than 3 million times in data breaches. To make matters even worse, here's the top 10 most used passwords in 2017. Not the strongest of passwords. To defend against these types of attacks, we can add what's called a salt to the password before we hash it. The salt is just some random data, but it ensures that the hash of your password will always be unique, even if others use the same password. So if Bob and Alice both use the password QWERTY, their hashes will be completely different. So if an attacker cracks Bob's password, he can't link that password to Alice, and he has to start his cracking attempts all over again. This technique prevents hackers from cracking a bunch of passwords in one go. It makes a brute force attack slower, but still very much possible. So to solve this, we have to take a look at another technique, which is using a special hash function, which is deliberately being slowed down. Example of these are bcrypt, scrypt, or argon2,
and they completely neutralize brute force attacks. These algorithms take a password as input along with a salt and a cost. This last one is very interesting. The cost defines the number of rounds the algorithm goes through, and this effectively slows it down. Now, over time, our computers become faster, and so brute force attacks against these algorithms becomes easier. And that's because they can simply try more combinations in a shorter time span. All we have to do to counter this is increase the cost parameter so the algorithm remains resistant against these types of attacks. Pretty genius. So those are the three options that a company has to store and protect your passwords. But why settle for just one method if we can use multiple? You can't be greedy enough when it comes to security. This multi-layer protection is used by Dropbox, for instance. They take your password and start by running it through a simple hash function without a salt. This is their first line of defense. They then take the hash and run it through the bcrypt algorithm with a salt and a cost of 10. This prevents brute force attacks. And finally, the resulting hash is encrypted with the Advanced Encryption Standard, or AES for short. The encryption key for this is not stored in their database, but is instead kept separately. So if an attacker breaches the Dropbox database, they will have to peel away each protective layer around your password, and that will take a lot of time. In fact, the cracking attempt would likely be more costly than what they get in return for compromising your account. So time for a conclusion then. If your account has been compromised, it's best to change your password immediately. However, depending on the security measures of the company that was compromised, it might be possible that hackers haven't been able to retrieve your password. And that's thanks to the magic of hash functions and cryptography in general. So now you know how companies can safely store your passwords. That was it for this video. If you learned something from it, समझ में आया? आजकल कौन सा प्रोसीजर यूज होता है? सॉल्ट. यस. ओके, सो हमारे पास अलग अलग टाइप के हैशेस के फॉर्मेट होते हैं. सो आई विल शो यू द हैशेस फॉर्मेट. कहाँ गए यहाँ नहीं है. ओके, जैसे कि MD5 हैश जनरेटर है, ठीक है. मैंने यहाँ पे किया, मैंने यहाँ पे लिखा रचित और जनरेट किया. Now look at here, this is the encryption format of Ratchet, ठीक है. ये किसका है? Ratchet का encryption format. तो मैं इसे एक नोटपैड पे डाल देता हूँ. ठीक. ओके. ये है MD5, ठीक है. ओके, फिर अब जैसे कि मुझे इसे डिक्रिप्ट करना है, ठीक है. तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और MD5 hash decryptor. So there are multiple online websites which is using for decrypt the hashes of MD5. So मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, वो जो हैश था उसको डाल देता हूँ, ठीक है. एंड जस्ट क्लिक टू डिक्रिप्ट. मैंने डिक्रिप्ट पे क्लिक किया. अगर इसके डेटाबेस में है तो इट विल फाइंड आउट दिस इज अ रचित, राइट. यस. ओके, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ. मैं यहाँ पर वापस से जाता हूँ एंड आई एम जस्ट यूजिंग RACHIT@1278 कुछ ये नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, मिसलेनियस नंबर, और जनरेट कर देता हूँ हैश. तो मेरे पास एक नया हैश आया. नाउ जस्ट गो एंड चेक दिस हैश, डिक्रिप्ट. नाउ लुक एट हियर. नो रिजल्ट फाउंड. पता चल गया कैसे चेक करता है? डिक्रिप्ट नहीं करता, चेक करता है बेसिकली, राइट. ओके. तो ये पता चला MD5 कैसा होता है ना. अब हम चलते हैं दूसरे पे. तो इनकोडर में हम चले गए. यहाँ पे बेस 64 है, तो जस्ट ओपन द बेस 64. मैंने यहाँ पे लिखा RACHIT रचित एंड जस्ट बेस 64 कोड. ओके, एंड नाउ यू, क्या हुआ? अरे बनाया नहीं. ओहो, डिकोड है ये. कैसे खुल गया?
अच्छा इनकोडर खोलना है हमें। सो मैंने यहाँ पे टाइप किया रचित एंड जस्ट क्लिक टू इनकोड। नाउ लुक एट हियर, दिस इज द MD base 64। ठीक है, यस। ओके नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। MD5 हो गया, SHA1 ओके फॉर्म नहीं है, ठीक है। 256 RACHIT Ratchet and just create. So now look at here, it will generated a new hash and ये क्या है, ये है SHA 256। ठीक है, ओके यहाँ पे है 512 RACHIT Ratchet generate. Now look at here, this is the SHA 512 exactly। साइज देख रहे हो? हाँ वो बिट बढ़ती जा रही है बेसिकली। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आता है आपका अलग अलग हैशेस के बीच में। फॉर्मेट क्लियर? में यस। अब टाइप के और भी बहुत सारे हैशेस हैं, यू जस्ट सर्च ऑन द हैशेस ऑन गूगल एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रीड इट। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन था, ये क्या हमारा जैसे यूनिक हैश हमेशा जनरेट होता है, तो लेट्स से क्या ये केस सेंसिटिव भी होता है? मैं अगर कैपिटल रचित डालूं और स्मॉल रचित डालूं, विल इट जनरेट द डिफरेंट हैशेस? मे बी पॉसिबल। नाउ लेट्स ट्राई। एग्जैक्टली डिफरेंस है। ओके ठीक है। नाउ लुक एट हियर, हाँ ठीक है। ओके नाउ उसके बाद क्या है आपके पास, हैशेस के बाद आते हैं हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, उसके लिए एक लिंक है, तो मैं ये लिंक अब प्ले नहीं कर रहा हूँ, ये आप देख लेना। ठीक है, ओके डिजिटल सिग्नेचर कैसे काम करता है, एक ऑटोमेटेड टूल है, वो आप समझ लो क्या है और किस तरीके से चलता है। तो ठीक। सबसे पहले ऑटोमेटेड टूल को चलाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इसके कुछ अलग अलग टाइप्स हैं कि किस किस तरीके से इसे रन कराना है। तो टूल का नाम है हैशकैट। ठीक है, ये जीपीयू का यूज करता है रिप्लेसमेंट ऑफ सीपीयू। सीपीयू से नहीं चलता, ये जीपीयू से चलता है। इफ यू डोंट हैव ए जीपीयू इन योर लैपटॉप और डेस्कटॉप, तो प्लीज डोंट रन दिस टूल। ठीक है, ओके ठीक है। सबसे पहले आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी यहाँ पे hashed.txt, यानी कि इसके अंदर सारे हैश होंगे पहले से इस फाइल के अंदर हर वर्ड के। ठीक है, फिर उसके बाद डिक्शनरी, जो आप एक जिसकी आपने हैश बनाए हैं उसकी एक डिक्शनरी फाइल ले लेना और उनसे चेक कराना नॉर्मल, ये प्लेन टेक्स्ट की फाइल है। ठीक है, और ये हैश वाली फाइल है। ओके। ठीक है, अब इनसे ये वाली चेक होगी फाइल किस टाइप का, एम बताता है मोड, कौन सा मोड है, हैश टाइप क्या है, 0 बताता है आपको MD5 हैश का नंबर है, माइनस ए बताता है कि आपका अटैक मोड कौन सा है, और 3 बता रहा है कि ब्रूट फोर्सिंग अटैक है। ठीक है, ओके तो ये आपको अप्लाई करना, यूज करके देखना और इसको रन करना। तो हम इसको रन नहीं कर रहे हैं बिकॉज हैशकैट जो है बेसिकली जीपीयू पे चलता है एंड दिस टाइम मेरे पास जो सिस्टम है उसमें इस चीज की फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, ओके तो आपके पास अगर हो तो यू कैन रन इट ऑन देयर। क्लियर है? क्लियर है। बढ़िया। सो वर्तिका, दिस इज ऑल अबाउट द कंटेंट ऑफ क्रिप्टोग्राफी जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, देखा है। ठीक है, तो आज आपका सेशन एंड होता है। ठीक है, एंड अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट होता है किसी भी तरीके का तो आप मैनेजमेंट को बोल सकते हो। ठीक है, एंड वो आपको मुझसे कांटेक्ट करा देंगे एंड आफ्टर दैट आप कोई भी डाउट क्लास है एक अपने सारे डाउट इकट्ठे कर लो और फिर उसके बाद
एक या 2 क्लासेस में हम उन डॉट्स को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? ओके, क्लियर है? क्लियर है। So now I'm just going to share the notes of this particular file.